Now we are going to discuss a general portrayal in media content. How JSI framework address the issue of uh, portrayal of gender in the media content. So, in order to ensure gender balanced or gender neutral media content, the first objective is balanced presence of women and media in media coverage of news and current affairs. It means that कि अगर आपका जो स्टाफ है और जो इन टर्म्स ऑफ एंकर्स, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टर्स, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी राइटर्स, इन टर्म्स ऑफ एडिटर्स, अगर वो जेंडर इक्वल होगा, यानी उनके मेन और वुमेन दोनों शामिल होंगे, तो जो जेंडर बेस्ड स्टोरीज होंगी तो यू कैन क्रिएट मोर जेंडर सेंसिटिव स्टोरीज और यू कैन क्रिएट मोर जेंडर न्यूट्रल स्टोरीज. और अगर वहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी तो यू कैन नॉट create a gender neutral story. You always create a gender biased story. So in order to ensure this objective, following are the indicators, and the indicator one is proportion of women and men appearing as spokespersons, experts, and ordinary citizens in news and current affairs shows or in the content of these programs. So it is very much important whenever you are reporting any gender based news, you should take the opinion of both genders and you should give chance to the both genders in order to express their point of view. The second indicator in this regard is the proportions of women and men directly interviewed quoted in news and current affairs content as sources of information and or opinions. If you are reporting any issue on any woman issue, so how many women are contacted, or how many women are reported as a source of information, it is very much important uh, in this regard. The third indicator of this objective is the percentage of stories focusing centrally specifically on women and or issues of special relevance concerned to women in news and current affairs content. फॉर एग्जाम्पल कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस की रिपोर्ट है, कोई वुमेन राइट्स की कोई स्टोरी है, या कोई वुमेन अचीवमेंट पे आप न्यूज़ डेवलप कर रहे हैं, तो आप जो है उस चीज़ को जो अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितने फीमेल जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को उसमें रिपोर्ट किया, और ओवरऑल इसकी क्या परसेंटेज है आपके न्यूज़ स्टोरीज में. द फोर्थ इंडिकेटर इज percentage of stories focusing proportion of time, space, and prominence in respect to prime time or peak hours, front page or feature story given to stories featuring women. तो आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन प्राइम टाइम में कितनी वुमेन लीडिंग जो इश्यूज पे जो स्टोरीज हैं उनको टाइम दे रही है, उसको एज अ फर्स्ट न्यूज़ स्टोरी कितना इसमें उसके प्रपोर्शन है, या जो है उसको कितनी आपके प्रोग्राम्स में स्पेस दी जा रही है, ये बहुत मच इम्पॉर्टेंट है. The second objective in this regard is fair portrayal of women and men through elimination of stereotypes and promotion of multi-dimensional representation. कि आप अगर कोई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें यू शुड टेक केयर ऑफ द स्टीरियोटाइप्स. यू शुड नॉट प्रमोट जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, and this can be assessed through following indicators. And the indicator one is the proportion of stories with stereotypes, depiction of traditional feminine masculine characteristics, and male female roles, thereby making them appear normal and inevitable while excluding other possible traits and functions for men and women in society. The second one is the percentage of stories that include multidimensional representation, portrayal of men and women, including journalistic effort to challenge counter gender based stereotypes. And the indicator 3 is percentage of stories that contain sexist languages used by reporters or broadcasters,
excluding in case of direct quote from a source that is indicative of bias, discrimination, or stereotyping based on sex or gender roles. The third objective in this regard is the coverage of gender equality and equity issues. And the indicator of this objective is percentage of stories focusing on issues of gender equality, inequality. And these stories include stories about specific cases of equality or inequality between women and men, relevant policies, legislative issues, programs designed to protect and promote human rights, women rights and gender equality. इसकी आप फॉर एग्जांपल जब भी हमारे यहाँ वुमेन डे आता है, तो आप देखते हैं कि भी इसको उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उसकी फेवर में कितने किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट कितने किए जाते हैं, या कैसे उन प्रोग्राम्स को पोर्ट्रे किया जाता है, उसमें वुमेन को इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट. द सेकेंड इंडिकेटर इज परसेंटेज ऑफ स्टोरीज highlighting gender equality, inequality, aspects of events and issues including politics and government, economics and business, war and conflict, crime, violence, atrocity, poverty, science and technology, sports, etc. जब भी आप स्टोरीज ऑन एयर करते हैं तो उसमें कैसे जो भी आपकी रेगुलर स्टोरीज होते हैं या उसमें से जेंडर एंगल आप रिपोर्ट करते हैं कि एक वुमेन साइंटिस्ट ने ये कारनामा अंजाम दिया है, या एक वुमेन पॉलिटिशियन ने ये पॉलिसी डेवलप की है, या एक वुमेन बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योर है उसकी क्या सक्सेस स्टोरी है. तो आप जो डे टू डे आपकी स्टोरीज हैं उसमें आप कैसे उसको जेंडर बेस्ड जो है उसका एनालिसिस करते हैं और कैसे उसमें इंश्योर करते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन हाईलाइट हो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. The third indicator is percentage of time or space and prominence in respect to prime time or peak hours, front page or feature story as compared to the other story given to stories highlighting gender related issues or drawing out the gender aspects of events or issues. तो आपकी जो कंटेंट है उसमें जो जेंडर बेस्ड स्टोरीज हैं या जो वुमेन इश्यूज पे स्टोरीज हैं उसको कितना आप टाइम और स्पेस दे रहे हैं अपने प्राइम टाइम में एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और कितना उसको फोकस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, ये भी हम देखते हैं. और ऑब्जेक्टिव 4 इज़ एविडेंस ऑफ जेंडर कॉन्शियसनेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटोरियल कंटेंट. तो आपके जो एडिटोरियल्स हैं उसमें जो है कितनी जेंडर कॉन्शियसनेस है इसको भी असेस किया जा सकता है. इट कैन बी असेस थ्रू percentage of such stories on the front page or during prime time bulletins, on the editorial or opposite pages in columns, studio discussions, interviews, feature documentaries, talk shows, and etc. And the percentage of stories on gender related issues on or gender aspects of event issues in the subject areas such as politics, including election coverage, economics and business, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा, कि ये जो स्टोरीज डेवलप हुई हैं उसका जो है जेंडर एनालिसिस क्या है. परसेंटेज ऑफ स्टोरीज दैट इंक्लूड सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा ऑन सच इवेंट्स और इश्यूज.